So guys, welcome back on another gameplay video on DS Gaming। तो यार आज डेज गॉन से थोड़ा सा हटके हम लोग एक अलग एक्शन आरपीजी गेम खेलने वाले हैं। तो यार इस गेम का नाम है बायो म्यूटेंट और ये गेम हिंदी सबटाइटल में भी अवेलेबल है। चलो यार पहले तो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर में कंफर्म कर लेता हूँ और एक म्यूटेंट किस्म का ही गेम है। तो यार गेम थोड़ा सा हटके है। गेम पे जो म्यूटेशन है वो इंसानों को नहीं एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो गेम हमारा बस यहीं से शुरू होगा। पहले तो इसका जो है म्यूटेंट एक्चुअली म्यूटेशन पावर जो है वो मैं एक्चुअली ले लेता हूँ और इसका जो कलर है उस कलर को हम लोगों को ठीक है इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू एंड वाइट बिल्कुल अच्छा रहेगा। और कैरेक्टर में क्या है, चलो यही वाला कमांडो सॉफ्टवेयर वाला। चलो कोई नहीं, हम लोग इसको ही चूज कर लेते हैं और हमारा गेम यहाँ से शुरू हो रहा है। कंटेंट ओके W आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जंप और चलो यहाँ पे कुछ कटसीन आ रहा है हम लोगों के सामने। वाओ ये क्या है, और एक दूसरा वाला ओके, एक फेरियर दूसरा डेविल। तो वार्तालाप हो रहा है इन दोनों में। यार गेम का एक चीज़ बहुत ही औसम लगा मुझे कि गेम का सबटाइटल जो है वो हिंदी में अवेलेबल, लाइक राजी। चलो राजी गेम प्ले तो ओहो बहुत ही बढ़िया, उसको मार के भगा दिया और खुद भी गायब हो गया। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यार जैसे कि मैंने कहा था कि राजी जो गेम प्ले है वो हिंदी सबटाइटल में भी अवेलेबल था और गेम बेसिकली इंडियन था, तो इंडियन सबटाइटल में भी होगा। और ये वाला गेम मुझे पता नहीं कि इंडियन है कि नहीं, ठीक है। तो यार मुझे अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे यार कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि गेम जो है वो इंडियन गेम है या फिर बाहर का। मुझे नहीं लगता कि ये बाहर का हो सकता है, मे भी, मुझे पता नहीं। तो चलो आगे बढ़ते। और ये क्या है, हॉर्स पोनीटेल, पता नहीं क्या है, व्हाटएवर। म्यूटेशन की वजह से सब गड़बड़ा गया है। और चलो यहाँ पे चेक करते हैं ये क्या हुआ है इसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सेल आ रहा है तब से। ओके कुछ आया, क्या है, ओ वाओ एकदम सुपर फास्ट। चलो यहाँ पे कंट्रोल वगैरह चेकआउट करना है। ओके लिफ्ट ओके, ग्रेट 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 और लेफ्ट ओके। फाइटिंग स्किल्स ओके इम्प्रूव। ओ नो, एक पंच मारा घुस गए हम लोग ज़मीन के अंदर। स्पेस लाइक ओके ओके शूटिंग ग्रेट। R for reload ओके क्लिक क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर ओके Q ओके ओ नो सॉरी ओके Q ओके हो गया। Q पर डिफॉल्ट शायद डिपेंड होगा। और प्लस साइड क्लिक ओके, इसको हराना है हम लोगों को। ओहो गया भैंस पानी में और इसका जो वेपन है उसको मैंने तोड़ दिया। क्या बात है यार, ओ नो टाइम टू स्किप ओके, भाग जाओ छुप जाओ बिल में। अरे क्या इसमें बॉम्ब है क्या, और ये ख़त्म कहानी, पता नहीं आगे क्या होगा। ओके बायो म्यूटेंट और हमारा स्टोरी यहाँ से शुरू हो गया। ग्रेट ओके नहीं एक मिनट, इसको चेकआउट कर लेते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेपन है, ये स्वॉर्ड। और ऊपर से कुछ गिरा तेंदुए जैसा या फिर कुछ पता नहीं क्या है, सब म्यूटेशन की वजह से गड़बड़ा गया है। और यहाँ पे स्किल्स का बेहतरीन उपयोग और ये छक्का नहीं। फाइटिंग स्किल्स ज़बरदस्त है, गेम भी ज़बरदस्त है और ठीक है। और एक और ये गया, ख़त्म कहानी सबका। तो ठीक है यार, अगर गेम प्ले पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक मारो
और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो यार ये जो गेम प्ले चैनल है मेरा, इसमें मैं यार गेम प्ले वीडियो प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। ठीक है, हर दिन एक नया गेम प्ले वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यार प्लीज़ चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ, और यार साथ ही साथ शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, और लाइक ठोक दियो यार, ज़रूर से ज़रूर जाते हुए एक लाइक ठोक के ज़रूर जाओ। ठीक है यार, आज के लिए बस यही गेम मैं प्रोवाइड कर सकता था। चलो आगे बढ़ते। ओके, और यहाँ से चेन ओके, चेन से ऊपर, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एनिमीज है शायद, खाली मैदान। हाँ, ये क्या है यार, पानी या कीचड़ में से कुछ रैट, पता नहीं क्या है, चूहा हो सकता है, पता नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे, ओके, डिपेंड करना है हमें। ओह नो, ये कोई बात नहीं, होता ही रहता है। ओह नो, क्या यार, एक मिनट, ओह शिट, इसको बड़ा वालों को तो पहले मारूंगा, मेरे को जा, कहानी खत्म। क्या बात है, और सबका कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत बढ़िया, देखते हैं इस, ओके, कुछ नहीं, यहाँ पे शायद कुछ मिलेगा। ओके, कुछ मिला हम लोगों को, ले लेते, जो भी मिलता है यार ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा काम पे आएगा। चलो अंदर घुसते हैं। ओके, और एक फिर से हम लोगों को शायद, ये क्या है, और यार ओके, इसमें शायद शिट पेट्रोल वगैरह या फिर कुछ है, गैस वगैरह जो फटता है। बूम, क्या बात है, बूम, मर गया, कहानी खत्म। ओके, कुछ मेडिसिन वगैरह मिला है हम लोग, कैप्सूल, एस्ट्रॉइड, पता नहीं क्या है। चलो ओके, यहाँ पे कुछ एक लेके देखता हूँ क्या होगा। ओके, ले लिया मैंने। ओके, फुल एनर्जी फुल हो गया हम लोगों को। ओके, यहाँ से गेट खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। यार गेम का एक्शन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक मोड़ पे एक एनिमी आप लोगों को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया गेम है यार। Look, an emergency box from the once was. A rare sight. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Grab on tight.
Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark Just a few moves left. Make them count. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. There you go. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. The scrap keeps piling up. Bubuko von Junvun pa webilia antuf yunulua. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend... The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end.
Tulua ba volua ya molovo. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. Yeah, mufurbo, boom. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided, and Tamok gabamok tab ya molovo. after the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Fofo bagwa papa mu. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike. The Nono's... You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for... Bagwa papa kwaiket momombuso. The tree stuck. Ewe boboye. Luatulu mau. Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the second coming, and our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. The water. Lotulu bayo. Luatulu mau. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. Lotulu bayo. The road ahead won't be easy,
but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. Kim hobe bekuku hifat muk. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Kim hobe bekuku hifat muk. He claims names have power, so he gave them these names to weaken them. For him, the porky puff is particularly personal. It was that carnivorous beast that took his leg. Ayamu aya. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the world eaters. To wo. तो यार आज के लिए गेम बस यहीं तक है। तो यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ, और गेम प्ले वीडियो अच्छा लगे तो यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। तो यार आज का गेम प्ले वीडियो बस यहीं तक है। आप तब तक के लिए मैं कल इसका जो दूसरा वाला पार्ट जो है वो खेल के प्रोवाइड कर दूंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से फिर एक बार अनदर पार्ट में इसी गेम का बायोम्यूटेंट पे। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters.